Today, there are 3 ENT specialists. All of us belong to the Association of Women Otolaryngologists of India. This is a newly formed association, and it is so exciting, and hopefully we would deliver to the public. We are creating public awareness on various topics. And the last 3 weeks, we have done it on different topics. And this time it's an entirely interesting and new subject. We have 2 talented people, beautiful women. And one of them is Dr. Sonika Kanotra. She's heading the Government Medical College in Jammu. And we have Dr. Dimple Sani. She's Professor Unit Head in Government College, Patiala. So both of them are going to share their experiences. And if you have any questions at the end of the show, please post your questions and we would be happy to answer. Now, so the topic is ENT services in the outpatient. Now, we have been practicing and for a long time now, these 2 women are in the government medical colleges, so they have great amount of footfalls. In private setup, we are able to give more time to the patients, but in government setup, they see a lot of interesting cases on a day-to-day basis and their volumes are much more. So that is why their experiences are so much more important. ENT is now so much more advanced that we're doing skull-based surgeries and we're doing cochlear implants, we're doing robotic surgeries and much more. So in order for you to understand that it is much more than common cold and sore throats, we will let you know one by one what exactly we do inside the outpatient. Dr. Sonika, first, why don't you share your experience? Yeah, ma'am. Thank you so much for joining me in. And as you rightly said, the patient load in a government medical college OPD is much higher as compared to that in a private hospital. And definitely we do have some limitations as compared to a private setup. So in fact, in that also we are doing our best and catering to a large number of population, trying to decrease the loss of work days and in case of for the patients. And I will start with very commonly done procedures, which I think everyone is doing, is a patient having wax. So wax removal is being routinely done in our OPDs. And in case it is an impacted wax, we do it under local anesthesia, but still in the OPD. Technological advancement, which has helped us in providing greater services in the ENT OPD, is the advent of endoscopes. So this introduction of endoscopes has greatly changed the way an ENT OPD works. Initially, our main focus in the OPD was only on diagnosis. But now, because of this, we are started doing therapeutic procedures. Like if a patient has some fluid behind the eardrum, we can easily go in for a laryngotomy, make a cut in the tympanic membrane in the eardrum and remove the fluid and simultaneously insert a grommet also. Patients who are having sudden sensorineural hearing losses, or patients with tinnitus, or patients with a very common disorder like a Meniere's disease, we are routinely doing intratympanic steroid injections, and that too in the OPD. Then coming on to small kids like foreign body removal, whether it be in the nose, in the ear. So these are being routinely done in the OPDs. And a very important thing which we are doing is endoscopy is now being done routinely in all patients with voice disorders. Previously, we used to need to take the patient to the operation theater, do a direct laryngoscopy under general anesthesia or a local anesthesia, which was very harsh on the patient. But now, because of availability of a fiber optic laryngoscopy, we can diagnose voice disorders and in fact treat some of them in the OPD itself. Right. Now, Dr. Dimple, why don't you share whatever your experiences in Patiala Medical College? Thank you very much for inviting me for this prestigious session. In the Government Medical College, Patiala, we have all sorts of, because this area caters to all the patients from this Sangrur, Bathinda, this side of Punjab. So here what we are most commonly doing is I'll start with the ear. In the ear, first we do audiometry. If the patients
those newborn children who are there in the labor room, we always go for OE examination so as to find out whether there is any kind of congenital hearing loss in the patient, so that they can be detected at an earlier stage and we can go in for cochlear implants. Secondly, we go in for all the audiometries. The old age patients who are coming to us with the hearing loss, we get the audiometry done, and fitting of the hearing aids can be done here in our OPD itself. Then thirdly, whenever there is a foreign body, just like Dr. Sonika said, foreign body removal that is routinely done, where most common foreign bodies that are coming to us, they are some toy batteries, or there are some grains, or there are some beads. These kind of foreign body removals we are doing. And in case, and biopsies also, if there is a small tumor, say of tongue, of nose, then we are doing the biopsies also. And when we have also set up a minor OT where we are doing all these OPD procedures, we do diagnostic endoscopy, we do direct laryngoscopy with the 70-degree endoscopes. We also, even in case of nose, if there is inferior turbinate hypertrophy, and in case of there is allergic rhinitis, we do silver nitrate paint over the inferior turbinate, and just to get their relief of the symptoms. And in case of any lip, most commonly you've got some submucosal retention cyst is there, so we just excise it, so and the patient can go home. Then in case of sinusitis, we go in for antral wash procedures. They also we are done in the OPD. So I feel that it is just ENT surgeries is not only seeing the ear, nose and throat, but it is much more beyond that. Then this season is of automycosis, the humid season. In that automycosis, lot of pain is there, fungus is there, and we just remove it either with a suction or a dry mop. Then nowadays, like there was mucor, post COVID mucormycosis was there. Then we used to take a KOH sample and send it then and there and take the biopsy from the nose or the palate, whichever area was eroded. So all these procedures are being routinely done and in our Patiala setup. Yeah, in fact, we receive a lot of cases of oral submucous fibrosis where we could give Kenocort injections for the trismus. And also we receive a lot of cases of vertigo, isn't it? All of us, every day receive patients with vertigo. And so we first do the tests and establish the cause, like we want to know whether it is BPPV or, any kind of vestibulopathy. So depending upon the cause, and then you can even give some treatment procedures like E-place maneuver. People are not aware of all this, so we probably can fix most cases in the outpatient itself. And of course, epistaxis, like nose bleeds, minor bleeds, most of them are fixed in the outpatient itself. We're able to do cauterization procedures in the outpatient itself. So there are so many more that we can keep doing. And you both want to add any more that you're recalling? Yeah, we have been injecting sclerosing agents also into small hemangiomas and lymphangiomas. We have been doing that also. And in fact, for small lesions of leukoplakia, erythroplakia, we've been doing laser also in the OPDs itself. Right. So, and one very important thing is patients who present to us with dysphagia, which is a very common thing like globus. So just to make and ensure the patient right away in the OPD, do a fiber optic laryngoscopy, show him the laryngoscopy, and he is satisfied. So I think that is one thing which is very important for us, and as well as for the patient, he goes tension free. Yeah, absolutely right. So Dimple, do you want to add anything more? Yeah, fresh nasal bone fractures, like trauma is very common these days because of the high speeds and people don't have patience and they drive so fast. If we get such patients in the OPDs, so we fix the with the help of the thumb and our fingers, we just fix that fracture so that correction is done at that time. We don't have to wait for another 7 days so that swelling comes, swelling subsides and patient has to be admitted. Yeah. That part, that is very important. Then another thing that we septal abscess that can be drained.
They are also, they are only in the For that outpatient. matter, any abscess, even if it's a tuberous Neck abscess in the neck, cold abscesses. Abscess. Right. Quinsy, peritonsillar abscess, that is also drained in as an outpatient part. So there are all the kinds of abscess are there, foreign bodies are there. Then nasal bone What about fractures. earlobule repair? I'm sure Yeah, you've lobuloplasty, yeah, that are lobuloplasties. being done here. So Yeah, one thing. Okay. Our general public, you know, they want to know also in Hindi. So why don't you like make it simple, both of you, and tell us again, you know, summarize this whole thing. And if you want to add any more procedures, fine, or else summarize what you already said. One by one, Sonika, yeah. या देखिए ऐसा है कि जैसे मैम ने पहले भी बताया है कि ENT सिर्फ अब जुकाम और खांसी नहीं रह गया है। ENT एक बहुत एडवांस्ड ब्रांच हो चुकी है और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम OPD में जो भी पेशेंट हो उसको अच्छे से ट्रीट करें और पूरी तरह उसको ट्रीट करें। सो इसी के लिए अब बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट हम लोग ENT में अब जैसे कान साफ करते हैं हम, कान की वैक्स है जो पेशेंट को बहुत परेशान करती है, या किसी को कान में फंगस हो गया है उसकी सिरिंजिंग होती है, किसी के कान के पर्दे के पीछे अगर पानी इकट्ठा हो गया है तो वो हम निकाल सकते हैं एक छोटा सा कट देके, और उसमें एक छोटी सी ट्यूब डाल के हम निकाल सकते हैं। और जैसे आपके कान में अगर बहुत ज़्यादा पस आ रही है या रेशा हो गया है, इमिडिएटली भी उसको ट्रीट कर सकते हैं सक्शन करके, और उसकी वॉश करके हम ट्रीट कर सकते हैं। छोटे बच्चे नाक और कान में फॉरेन बॉडीज फंसा के आते हैं, वो इजीली निकाले। The ear part, like कान में ये छोटे मोटे पॉलिप्स होते हैं या ग्रेनुलेशंस होते हैं, तो उसको जंक्शन वायलेट वगैरह से कॉटराइज यस, उसको वी कैन कॉटराइज, हाँ उसको कॉटराइज कर सकते हैं, उनकी बायोप्सी ले सकते हैं। और जैसे लोगों को चक्कर आते हैं, वर्टिगो की केसेस होते हैं, उन केसेस में उनको डायग्नोज करके और फिर उनके लिए कई एक्सरसाइजेस होती हैं जिन्हें हम मैन्यूवर्स कहते हैं, वो हम कर सकते हैं और वहीं पे वो ठीक भी हो जाते हैं। और ऐसे ही जैसे अगर पेशेंट को कोई रसोली बनी है, जो छोटी रसोली है जैसे नाक में है या मुंह में है, ऐसे ही बच्चों की बड़ों में रसोली के जो है पीस लेके, या जिनको हम बायोप्सी कहते हैं, बायोप्सी लेके टेस्ट के लिए भी भेज सकते हैं। वो पेशेंट जिनको आवाज साफ नहीं है या खाने पीने में कोई दिक्कत है, उनकी OPD में ही एंडोस्कोपी हो जाती है, जिसे फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी कहते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी से हम बायोप्सी भी ले लेते हैं। सो ये चीजें जो है आजकल रूटीनली की जा रही हैं OPD में। एक और चीज है, जैसे जिन पेशेंट्स को चक्कर आते हैं, जिन्हें मीनियर्स डिजीज है या फिर जिनकी सुनाई एकदम कम हो गई है, उन्हें हम कान के पर्दे के अंदर इंजेक्शन लगा के, जिसे हम इंट्राटिम्पैनिक स्टेरॉइड इंजेक्शन कहते हैं, वो भी रूटीनली कर रहे हैं। तो ENT OPD में आजकल सिर्फ मरीज ही नहीं देखते हैं, हम उन्हें ट्रीट भी करते हैं। बिल्कुल सही। And intratympanic gentamicin भी दे सकते हैं। Yes, we have been giving tympanic gentamicin also. Depending upon the need. So जैसे डॉक्टर सोनिका ने कहा है, वो सारी चीजें हमारे ENT OPD के अंदर ही फिक्स हो सकता है, मतलब आपका इलाज हो सकता है। हर एक चीज के लिए आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। कई बार आपको पता नहीं है कि सर दर्द किसके वजह से है, या जैसे हर चीज, जैसे नक्सीर हो रहा है या चक्कर हो रहा है, हम इलाज उसका आउट पेशेंट तरीके से ही कर सकते हैं। डॉक्टर डिम्पल, आप भी हिंदी में बताइए और क्या क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी लोगों को कि जो ENT है वो नाक कान गले की प्रॉब्लम्स है, उसके लिए आप लोग ENT डॉक्टर के पास जाते हो। लेकिन जो ENT के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उसके लिए आप किसी मेडिसिन या किसी RMP के पास भी जाओगे, वो सिर्फ दवाई देख के दवा लिख देंगे। लेकिन अगर आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, पहले तो वो इसको डायग्नोज करते हैं कि अगर कान में दर्द है या कान में रेशा है या कान में किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, कोई खारिश है, वो किस वजह से है। फिर उसके बाद उसी वक्त उसमें उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, औजार भी होते हैं। अगर वैक्स है तो, अगर कान में मैल है तो मैल निकाली जाती है, अगर फंगस है फंगस निकाली जाती है, अगर कोई कान के पर्दे के पीछे रेशा है तो वो सिरिंज से उसको भी निकाला जा सकता है। और उसके अलावा अगर कान में कोई छोटा मोटा कोई रसौली हो गई है तो वो भी उसको उसी टाइम पे OPD में ही निकाली जा सकती है और उसी वक्त थोड़ी देर में पेशेंट को घर भेजा जा सकता है। इसके लिए कोई उसको एडमिट होने की जरूरत नहीं, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, अगर कोई जैसे नया जन्म दिया हुआ बच्चा है, उसका टेस्ट हो जाता है, पता लग जाता है उससे कि उसको कोई
जन्मांतरू जन्म से कोई बहरापन तो नहीं है। अगर बहरापन आ रहा है तो उसको आगे कॉक्लियर इम्प्लांट्स होते हैं, उसके लिए रेफर किया जाता है। जो लोग डिसेबिलिटी के लिए आते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आते हैं, वो भी सारा ओपीडी में ही जारी किया जाता है। और फिर जिसको एकदम हेयरिंग लॉस होता है, ओल्ड एज जो बुजुर्ग आते हैं, बूढ़े पेशेंट्स आते हैं, उनके लिए हम टेस्ट करते हैं और हियरिंग एड लगा के उनको उसी टाइम पे उनको तुरंत ठीक करके ही भेजा जा सकता है। बाकी Similarly, रहे नाक के temporomandibular पेशेंट्स, नाक के लिए जैसे नाक की कोई नक्सीर फूट जाती है, गर्मी में फूट जाती है, बच्चों में फूट जाती है, और बुजुर्गों में या डायबिटिक पेशेंट में, हाइपरटेंशन पेशेंट में, तो उसी टाइम हमारे पास दूरबीन होती है, उससे देखते हैं कौन सा पॉइंट ब्लीडर है, उस पॉइंट को या केमिकल के साथ या हमारे पास कॉटरी होती है, उसी टाइम कॉटरी करके वो ब्लीडिंग रुक जाती है, उसको पेशेंट को घर भेज देते हैं। और उसके अलावा नाक में जैसे बच्चे गिर के नीचे, तो जो नाक की हड्डी है उसके बीच में रेशा इकट्ठा हो जाता है, पस बन जाती है, तो वो पस को भी उसी टाइम पे ड्रेन हो जाता है। या कोई गिर जाता है तो उसके फ्रैक्चर हो जाता है, अगर तो टाइम पे आ गया तो फ्रैक्चर रिडक्शन भी उसी टाइम पे करके उसके बाद उसके बाहर, नाक के बाहर पट्टी लगा के उसको भेजा जा सकता है। और अगर नाक में कोई रसौली है तो रसौली का भी पीस टेस्ट करने के लिए पीस ओपीडी में ही लिया जाता है। और अगर कोई नाक में एलर्जी के फीचर्स हैं, बहुत सारी छींकें आती हैं जो बहुत कॉमन है आजकल, तो उसको देख के चेक कर लेते हैं कि अगर कोई अंदर मांस बड़ा हुआ है, जैसे टर्बिनेट उसको हम कहते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में, उसके 2 तरीके के ट्रीटमेंट हो जाते हैं। या तो केमिकल पेंट होता है सिल्वर नाइट्रेट, वो लगा देते हैं, या हम क्रायोथेरेपी कर देते हैं, जिससे बहुत चिल करके उसको कर देते हैं। होली होली वो अपने आप, जो टर्बिनेट है, जो मांस बड़ा हुआ है, वो अपने आप श्रिवल ऑफ होके निकल जाता है। तो बाकी तो आगे कई गले सारी की इंजेक्शन ट्रीटमेंट्स भी हैं, फॉर इंजेक्शन एग्जांपल ट्रीटमेंट भी, न्यूरैल्जिया। स्टेरॉइड इंजेक्शन भी इंजेक्ट करते हैं ताकि वो फाइब्रोज हो जाए और वो रिएक्ट ना करे जो म्यूकोसा, और बार बार उसको जुकाम ना लगे। फिर जो गले की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई जीभ का कैंसर हो गया, चुप मुंह का कैंसर हो गया, कई बार मुंह नहीं खुलता, जो लोग जर्दा बीड़ी सिगरेट पान पराग ये चीजें च्यू करते हैं, उनमें ये कॉमन आ जाता है। फिर हम उसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसका मुंह खुलना शुरू हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम काउंसिल भी करते हैं कि इन लोगों को कि स्मोकिंग को क्विट करना चाहिए, बीड़ी सिगरेट जर्दा ये चीजों को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये प्री कैंसरस होती हैं, ये चीजें कैंसर इन लॉन्ग टर्म कैंसर कॉज करती हैं। तो ये जो है हम काउंसलिंग भी जो है ये ENT डॉक्टर्स करते हैं। और जो चक्कर की बीमारी है, चक्कर के कई कारण होते हैं। एक तो कारण होता है कोई सर्वाइकल की वजह से, कोई ब्रेन की वजह से। जो अगर कान की वजह से होता है तो हमारे पास टेस्ट है, जैसे डिक सल्पाइक टेस्ट है, वो हम करते हैं। उसके बाद उससे रीसेट हो जाते हैं, कान के अंदर छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हिल जाते हैं, और उसके बाद जब हम उसकी मैन्योवर्स करते हैं उसी टाइम पे पेशेंट कहते हैं कि मेरे चक्कर ठीक हो गए, अगर वो कान की वजह से है। तो डायग्नोज भी करते हैं, उसको ट्रीट भी करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और फॉरेन बॉडीज, छोटे बच्चे हैं, गांव के बच्चे, हमारे पास गांव के बहुत पेशेंट्स आते हैं गवर्नमेंट सेटअप में, तो कभी कान में कुछ फॉरेन बॉडी घुसाई होती है, कभी नाक में होती है, कभी गले में कॉइन होता है, वो कॉइन तो चलो GA में होता है, बाकी जो छोटी मोटी बॉडीज होती है, नाक की होगी, गले की, ये कान की होगी, ये सब हम OPD में ही निकाल देते हैं। बिल्कुल सही। और इनफैक्ट राइनोलिट्स, साइनोलिट्स, लाइक राइनोलिट्स कई बार अभी हमारे आउट पेशेंट्स में आते हैं, जैसे पत्थर की तरह उनका नाक बंद रहता है हमेशा के लिए, और फाउल स्मेल मतलब बदबूदार रहता है, तो अंदर देखने से पता चलता है राइनोलिथ है, जो एकदम स्टोन की तरह, पत्थर की तरह होता है, और हम उधर ही आउट पेशेंट में ही इसको निकाल सकते हैं। और कुछ ट्यूमर्स, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोमस ट्यूमर्स, हम आउट पेशेंट में ही कान देख करके पता चलता है कि क्यों इनका टिनिटस होता है, मतलब ये रिंगिंग सेंसेशन कान में क्यों है, तो ये सनराइज साइन, कई चीजें हैं, डायग्नोस्टिक मेथड्स जो इतने इम्प्रोवाइज हो गए हैं अपने एंडोस्कोप्स के कारण और लेजर्स के कारण और माइक्रोस्कोप के कारण, इतने एडवांसेस है कि कई बीमारियों को हम पकड़ भी सकते हैं और इलाज भी कर सकते हैं। लाइक टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसलोकेशन, आते हैं पेशेंट को पेन भी रहता है और ये जॉइंट का डिसलोकेशन होता है, तो हम बैंडेज करके हम उसी समय इलाज कर सकते हैं, उसका जॉइंट वापस पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे इलाज करने का तरीके हैं। और सोनिका जी और डिम्पल जी, बिफोर वी वाइंड अप,
up. You want to say it, anything more you want to add on? Please, you're welcome. Yes, one point which Dr. Dimple stressed was counseling of the patient with cancer. So I think that is very important. All patients who are smokers, because routinely we ask patient whenever he comes to the OPD with a precancerous condition or a very suspicious lesion, we do ask him regarding smoking and tobacco chewing. So that counseling part becomes very important. First. Secondly, counseling of patients with allergic rhinitis becomes very important. So they have to be stressed on that prevention is much better than taking so many medicines. And that counseling does definitely affect and improves the quality of life of the patient. Thirdly, one is neonatal hearing screening, which Dr. Dimple said is truly, it is a boon for patients with congenital hearing losses, because that leads to an early diagnosis and definitely treatment of such patients, and decreasing the load on the parents, because there's loss of so many work days, because then they just keep hopping from one doctor to another doctor for the hearing loss management. So these things are very important. And one more thing, very important thing, is that all these patients who come to us in the OPD, they are now undergoing routine diagnostic procedures, whether be a diagnostic nasal endoscopy or a laryngoscopy, and they are being treated properly rather than just prescribing antibiotics and anti-allergics and just letting them off. So we treat patients with endoscopy routinely and then make a proper diagnosis and then treat them accordingly. So this boon is all because of, I will again stress, because of endoscopes becoming available everywhere. And in fact, it has changed the look of the ENT OPD from a bull's eye lamp and a head mirror to an endoscopic set. Right. And even procedures like tongue tie in a little older kid, you can do it here itself. Yes. In the outpatient, the tongue tie can be released. And also there are many other things. For example, the sinus surgery has happened elsewhere, and they've come to us for some kind of, either remnant disease or blockages because of adhesions. Those adhesions can also be corrected in the outpatient. So there are many, many procedures that you can keep recalling while we're talking. One I recalled was a submandibular stone removal, which we are routinely doing. I think all of us skipped that. A submandibular stone removal lying in a duct is easily removed in OPD. Another thing that is very commonly done in our OPD is the TCA application for a very small size perforation. Yes. Office myringoplasty. Office myringoplasty it is called. We do a TCA application and then we place a small gel foam over it and repeat it. Use the cigarette paper also. Cigarette paper also uses that. Yeah. So this is a routine thing that is being done, and I think all of us missed it. So though it is more commonly done, I suppose in Jammu also, and everywhere patients are coming. जो लोग आते हैं हमारे पास, छोटी-छोटी perforation कान बहता है. I'm talking in Hindi because this is a common language that is used के कान बहता है, जो अगर छोटा सुराख है तो हम उसको वहीं पे फिक्स कर देते हैं, और अगर वो बड़ा है तो हम उसको सर्जरी करते हैं. So this was the thing I think we all missed. So this small retention cyst. Retention cyst that I told, we can excise it and we can send then and there. And then tongue tie also, that is very important. Done even small children, it is being done. जैसे इसको in this Hindi it is called tandua. So that is the thing that we can do right in the OPD. So I just want to summarize. We can even do wedge neck biopsies. Yeah, biopsies in the neck. Yeah. So the one, just to summarize all this, that endoscopes and microscopes, they have changed the scenario of ENT OPD and ENT practice and to the ENT surgeons, and it has given a great respect to them also, and given a kind of a specialist treatment. Otherwise, what used to happen is ENT patients used to go somewhere in medicine being treated here and there. Now they just find out, they Google where the ENT specialist is there, and there only they go. And it is much more economical also, like even in private setup.
Like you can do nasopharyngeal mass biopsies in the outpatient itself. You Hmm. can take supraglottic mass biopsies in the outpatient itself. So, certainly it's much more economical, convenient, and In government setup, everything is economical. and also snoring and sleep apnea. Yeah. खराटों की बीमारी लेकर आते हैं, उनको ये awareness नहीं होता है that snoring is associated with sleep apnea, which is a dangerous ailment and it is a root cause for many disorders. तो इसके लिए भी diagnostic endoscopy करते हैं और upper airway में जो blockages है उसको दिखाते हैं patients को कि what is the cause. And sometimes rarely you got to do even ovuloplasties and वो भी OPD में हो जाता है. So इस तरह से डॉक्टर सोनिका ने और डॉक्टर डिम्पल सानी ने आपको बहुत सारा समझाया, बहुत कुछ हो सकता है आउट पेशेंट में. सो ENT अब आगे से प्लीज ये मत समझे कि सिर्फ सर्दी जुकाम का कोई ब्रांच है. इसमें तो आप कई सारे चैप्टर्स हैं, कई सारे एलिमेंट्स हैं, आप हजारों एलिमेंट से ज्यादा है. आप लोगों को आप लोग हैरान होंगे कि वाकई 1000 बीमारियों से ज्यादा है अपने ENT और हेड एंड नेक सर्जरी के अंदर. और आप लोगों का पेशेंट लिसनिंग की वजह से, और आई होप यू हैव learned a lot today, and I'm sure we have kind of managed to enlighten your yourself. And please subscribe to this channel, and every week we're going to come up with a new topic. And Dr. Dimple and Dr. Sonika, don't you think we should encourage more and more interns to take up this specialty? Because we being the mentors, like we can guide them and tell them what is the advantage of taking this branch, whether it is earlier क्या होता था, सिर्फ मेन लेते थे, आदमी लोग लेते थे इस ब्रांच को. Now I see more and more women doctors taking up this branch, and it's because actually like, why don't you, the two of you, tell the junior colleagues, especially people who are doing MBBS and people who are doing internship, please tell them why ENT is a good branch to take up. Ma'am, ENT is an excellent branch, especially for females. I think it's my opinion, and that's why I took ENT, because in this you can decide whether you want to become a surgeon or a physician, and if you want to become both, that's very good. Secondly, the emergency part in this is not very much like in usual gynae and obs, and I don't think they have those ladies have a life of their own. So this is a very good branch, keeping in view that the lady, because you are a lady, you have to take care of the house also. You can take care of your house also, as well as you can do your own practice your own subject. And in the coming times, it has even become better because of the subspecialization. So if a candidate or if a student wants to subspecialize, he can just do an MS in ENT and he can subspecialize in that specialty. So I think, and I think we need more subspecialists, because it is such a very varied branch. It's an extensive branch: cancer and otology, rhinology, neurotology, and so many things. So we in the future will need subspecialists, and maybe there might be some specialists maybe 100 years after this, maybe for a tip of the nose or for right ear or left ear, maybe like that. So it is such an extensive branch. Yes. So and Dr. Dimple, what are your views? Like, would you recommend people to take up ENT? Yes, I would definitely recommend people, and especially when you ask the female colleagues, and not only female, but all the even the males also. It is very good for the females as well as males to take up this branch, because now it is not a specialist branch, but it has become a super specialist branch, because now we are super specializing in oncology, that is the cancer surgery. So that is separate. Rhinology is separate. Otology is separate. So one can super specialize in any of these. One can go in for fellowships at any place and in any of these branches. And thirdly, it depends upon the individual choice, whether he is interested in ear surgery, whether it is interested in laryngeal surgeries, whether he is interested in throat surgeries, or whether he's interested in rhinology, nose surgery. Then another subspecialty, you can go in only for the allergy clinics, you can go in for vertigo clinics, you can go only for cochlear implants. Then as you can go in for robotics. So you've got a wide range where you can turn. It's not that you get fixed to one particular point.
And secondly, I agree with Dr. Sonika. The number of emergencies are not much, but another thing that we can give, we can also ENT surgeons can give, which is most rewarding, is give them the breath. That is doing tracheostomy when patients are coming with respiratory distress and we remove the distress. Not even surgeons don't even dare to. They are doing thyroid, but they don't dare to reach the trachea. They'll always call ENT surgeon, and that is the most rewarding and most satisfying thing that we can do for any person who is with cancer and with respiratory distress coming to you and getting relieved. Absolutely. So we strongly recommend ENT and head and neck surgery because it is a wide specialty with varied interests, and you can choose your interest and take up your further subspecialty of your choice. And with the integration of technology into medicine, now things are amazing. We're all enjoying our work because every day we get newer devices. Like sometimes we're doing coagulation surgeries, we're doing more and more oral laser microsurgeries, we're doing robotic surgeries. So it's really amazing. So we recommend the juniors to take this, and in fact I hope the top few ranks are for ENT and head and neck surgery. So thanks Dr. Sonika, thanks Dr. Dimple. It has been very informative, and we leave this to public for for their views, and if there are any questions they're going to ask us. Thank you all. Thank you so much, ma'am. Thank you.